Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will start the new chapter. The name of the chapter is continuity and differentiability. In class 11 you have learned the chapter limit and differentiability, where you have learned how to find the limit of a function, its right hand limit, its left hand limit, when limit exists, etc. And here this is nothing but the continuation of that chapter only. Okay, to say that a function f is continuous at the point x is equal to c, it means that there is no interruption in the graph of f at c. That is, its graph is unbroken at the point c. There are no holes or jumps or gaps. For our better understanding, look at these figures. Okay, in figure 1, the function has a hole at the point x is equal to c. This is the hole. This means that the function fx is undefined at the point x is equal to c. In the figure 2, the function fx is defined at the point x is equal to c. क्योंकि देखिए इसमें डिसकंटिन्यूटी है, इसमें होल है, लेकिन ये जो पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ से at x is equal to c the function is defined, but the limit at x tends to c of fx does not exist, and thereby causing a break in the graph of this function. Okay, so these two functions are not continuous because इसमें एक होल है और इसमें ब्रेक है. So these two functions are not continuous at the point x is equal to c. So the function f to be continuous at the point x is equal to c, the function must be defined at the point x equal to c. The limit must be exist as x tends to c, and the functional value must be equal to the limiting value at the point x equal to c. So एक फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. मान लीजिए हम लोग को कंटिन्यूटी शो करना है एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो 3 कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी. फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी में डिफाइंड होना चाहिए. द सेकेंड कंडीशन इज लिमिट एग्जिस्ट एज एक्स टेंस टू सी, उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, एंड द लिमिटिंग वैल्यू एंड द फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी equal at the point x equal to c. Therefore, definition of a continuous function is a function f is said to be continuous at a point x equal to c if the following conditions are satisfied. The first condition is the function is defined at x equal to c. Second condition is limit as x tends to c of fx exists, and the third one is limiting value must be equal to the functional value at the point x equal to c. If a function satisfied these 3 conditions, then we say the function is a continuous function. Otherwise, it is discontinuous. And the point x equal to c is called the point of continuity. Continuity in an interval. A function f is said to be continuous in an open interval ab if it is continuous at every point in ab. That is, we say the function f is continuous in the open interval ab if f is continuous at every point in ab. Okay, so in open interval ab में फंक्शन f कंटिन्यूस होने के लिए विद इन ab में जितना पॉइंट्स है उस सब पॉइंट्स में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. नेक्स्ट इज ए फंक्शन f is said to be continuous in a closed interval ab if it is continuous at every point in ab. जो ओपन इंटरवल ab है, इसका रेंज में जितना पॉइंट्स है सब पॉइंट्स में कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट a, दैट इज द एंड पॉइंट a फ्रॉम द राइट एंड कंटिन्यूस एट b फ्रॉम द लेफ्ट. इसमें जो एंड पॉइंट है a एंड b, a पॉइंट में भी कंटिन्यूस होना चाहिए फ्रॉम द राइट एंड b पॉइंट में भी कंटिन्यूस होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट. दैट इज लिमिट x टेंस टू a प्लस. x टेंस टू a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट.
of fx must be equal to the functional value at the point A, and left hand limit at x is equal to b, that is limit x tends to b minus of fx is equal to f of b. इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू b मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट b. तब क्या होगा, द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द क्लोज्ड इंटरवल a b. सो क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, द फंक्शन f मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल a b, एंड एट द एंड पॉइंट a एंड b में भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. इसमें a पॉइंट में फ्रॉम द राइट एंड b पॉइंट में फ्रॉम द लेफ्ट. एट द पॉइंट a, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट a, एंड एट द पॉइंट b the left hand limit of fx must be equal to the functional value at the point b. Algebra of continuous function. Suppose f and g be two real functions continuous at a real number c, then f plus g is also continuous at x is equal to c, f minus g is continuous at x is equal to c, f into g is also continuous at x plus c, f divided by g, that is f of x divided by gx is continuous at x is equal to c, provided g c not is equal to 0. That is, sum of two continuous function is a continuous function. Difference between two continuous function is continuous. Product of two continuous function is continuous. And the quotient function is also continuous, provided that denominator में जो function है उसका जो functional value must be not equal to 0, must be non-zero. Okay. Next, the very important notes. Every polynomial function is continuous and every rational function is also continuous. Okay. So, every polynomial function is continuous. And number two, every rational function is continuous.